A very good morning to all of you my dear friends. ସବୁ ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଯାହାକି ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରାସାରିଛି। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ବି ନୋଟ୍ସ ପହଞ୍ଚିନି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ତାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଓକେ, ୟେସ୍। ତ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାର୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ମୁଁ ମାନିକି ଚାଲିବି 40 to 45 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଠି 40 ବା 45 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବି। ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ନେଇଯିବି। ଓକେ, ୟେସ୍। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को आम चारिटा पार्ट रे कवर करिबा। प्रथम पार्ट रे आम कवर करिबा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आम केमिति तयारी करथाउ। सेकंड पार्ट रे आम कवर करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंडीशन एंड वारंटी। थर्ड पार्ट रे आम कवर करिबा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। लास्ट पार्ट रे आम कवर करिबा अनपेड सेलर। तो प्रथम सेक्शन रे आम ट्राई करिबा कवर करिया को फास्ट पार्ट रे एवं चारिटा पार्ट रे आम चेष्टा करिबा, चारिटा क्लास रे आम चेष्टा करिबा ए चारिटा पार्ट को कवर करिबा पई। ओके, तो सब पिला माने देखिबे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। प्रथम पार्ट रे आम पढिबा फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आम केमिति तयारी करिबा बा एहार एसेंशियल एलिमेंट्स कोन, ये सब बाबद रे आम डिस्कशन करिबा। रेडी? यस। प्रथम आसुची कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे आमे कोन पढिबा ना एग्रीमेंट हो। डिटेल्स आगे पढी आसीबा, तापर लास्ट को ए चार्टटा तुम सहित डिस्कशन करिबी। प्रथम होची इंट्रोडक्शन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट recognized and regulated by law in India। एग्जाम रे पढुची सेल ऑफ गुड्स एक्ट केबे आसिला, दैट इज 1930 रे आसिला। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज an act to define and amend the law, अर्थात relating to sale of goods। मन रखिबे sale of goods, not sale of property। सेल ऑफ गुड्स केस रे कौन कौन रूल्स रहिबो, कौन कौन प्रोविजन रहिबो, काहाकू आमे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बोली कहिबा, एवं टाइम टू टाइम लॉ केमिति अमेंडेड होबो, एहाकू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रे कुहा जायछि। सबुटार इंपोर्टेंट कथा होची इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, एवं एहा 1 जुलाई 1930 रे इंप्लीमेंटेड करा जायतिला। जो दिन सीए डे बोली आमे सेलिब्रेट करूचे, जो दिन जीएसटी एक्ट मध्य कोन हेतिला ना होल इंडिया रे एप्लीकेबल हेतिला। 1 जुलाई 1930 एमसीक्यू आसी पारे। फर्दर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। मन रखिबे एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची जे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, applicable for the contract of sale of property, both of these, none of these। मन रखिबे sale of goods, which means movable property। The act is not applicable sale of immovable property like land, shop and house। मन रखिबे एबे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत किछि क्वेश्चन पडुची जोडी को नॉट नेगेटिव रे दउची। जत्ते बेले भी क्वेश्चन पढिबे भलसे क्वेश्चन पढिबे। The act is not applicable to, नहले तमे नॉट को ओमिट कर दबो, applicable to पढि देकी एग्जाम रे पळे आसीबो। नॉट applicable एग्जाम रे देइथिबो the sale of goods act 1930 is not applicable ए रे लैंड रे, बी रे शॉप रे, डी रे हाउस रे देइथिबो, तापरे ई रे गुड्स रे कहा ऊपर applicable न बा ऑल ऑफ दिस देइथिबो। बुझिउछ? Yes। Next point, the expression used but not defined in the Sales of Goods Act 1930
and defined in Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that act. अर्थात जदि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रे बा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे एमिति किछि टर्म आसिला जहार मीनिंग जहार एप्लीकेबिलिटी जहार माने कॉन्ट्रावेंशन पेनाल्टी व्हाट एवर मे बी जहा 1930 रे नाही ताहार माने आमे कोट उठेबा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रु नबा बुझियला यस ताहापर पढिबा एग्जाम रे आसुची निश्चित एग्जाम रे आसुची डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4 हिसाब रे एग्जाम रे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेल आगे पढ़िबा जे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आमे काहा को कहबा सब पिला माने देखिबे इन सेल सेल रे कोन हबो द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ए ट्रांसफर फ्रॉम बायर सेलर टू बायर इमीडिएटली बहुत इंपोर्टेंट ट्रांसफर हबो प्रॉपर्टी इन गुड्स रो माने होची ओनरशिप प्रॉपर्टी इन गुड्स रो माने होची ओनरशिप ट्रांसफर हबो इमीडिएटली The term sale is defined under section 4 subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930 as कौन कुआ गला where under a contract of sale the property in goods कहले ownership is a transfer from seller to buyer the contract is called as a sale से कुछ जेउ contract of sale रे प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होबो सेही कॉन्ट्रैक्ट को आमे सेल कॉन्ट्रैक्ट बोली कहबा फॉर एग्जांपल एक्स गला गोटे बुक स्टोर रु कोन आसिला ना 500 रुपीस पे कला एवं इमीडिएटली कोन हला ना बिजनेस लॉ रो बुक्स परचेज करिके आनिला तो जेउ शॉप रु आनिला जेउ शॉप रु एक्स आनिला कोन हला ना जिते बेले एक्स तार प्राइस पे कला प्रॉपर्टी इन गुड्स अर्थात ए बिजनेस लॉ बॉय कहा रही गला ना मिस्टर एक्स रही गला मन रखिबे जेउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होबो ताकू हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोली कहबा बुझियला यस तो एग्रीमेंट टू सेल रो माने कोन सब पिला माने बुझिबे In an agreement to sell, the ownership of the goods is not transferred immediately. ध्यान से देखिए most important point गोटे point of difference तुमको मिलेगा जे agreement to sell रे property in goods immediately transfer हुए ना तापरे it is intending to transfer at a future date. Oh my God आज हमें contract करूचे किंतु भविष्यत रे property in goods transfer करा जीवो upon the completion of certain condition thereon कहले let's suppose आमे कौन करिबा ना आमे गणेश पूजा करूची तो गणेश पूजा सेप्टेम्बर 19 तारिख रे पडुची गणेश पूजा तो हमको कौन करिबा को पड़िबो ना ता पूर्वरु जे कारीगर अछंती ताको सहित जाई कि देखा करिबा को पड़िबो जे आमे सेप्टेम्बर 18 तारिख यानी पूजा पूर्व दिन कौन करिवु तुम ठारू मूर्ति किनि कि न से कथावार्ता केबे करा गला ना लेट सपोज सेप्टेम्बर 2 तारिख रे करा गला तो सेप्टेम्बर 2 तारिख यानी टुडे आमे कोन करूचे ना आजी कॉन्ट्रैक्ट करूचे केबे जिंस किनिबा ना फ्यूचर डेट रे जिंस किनिबा राइट जो दिन गणेश पूजा हबो ता पूर्व दिन आमे आसे कि जिंस न ये होची एग्रीमेंट टू सेल रो गुटे कंडीशन जे फ्यूचर डेट रे कोन करा जिवो ट्रांसफर करा जिवो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 रे एग्रीमेंट टू सेल रो माने कोन डिफाइन करा गला where the transfer of property in goods is to take place at a future time जदि भविष्यत रे केते बेले प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होबो और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड किछि शर्त फुलफिल होई सरला परे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होबो सेही भलिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आमे कोन कहिबा ना एग्रीमेंट टू सेल बोली कहिबा कोन कहिबा ना एग्रीमेंट टू सेल बोली कहिबा
Thus, whether a contract of sale of goods is an absolute sale or an agreement to sell. ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ପଢେଇଥିଲି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1872 ରେ ପଢା ଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ କହୁ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ଏକ୍ସ କହିଲା ମୁଁ ତତେ କାର ସେଲ୍ କରିବି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ, ୱାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଏକ୍ସ ତାକୁ କାର ଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ମାନେ ୱିଥ୍ କଣ୍ଡିସନ। ୱିଥ୍ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କ'ଣ? ୱିଥ୍ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ 500 rupees ପେ କରିବି। ଏକ୍ସ ୱାଇ କି କହୁଛି ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ 500 rupees ପେ କରିବି। ତା ମାନେ ଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ୱିଥ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। से कौन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स इज एन एब्सोल्यूट सेल। एब्सोल्यूट सेल कहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विथ कंडीशन कहले दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। डिपेंड्स ऑन द फैक्ट वेदर इट contemplates immediate transfer from the seller to buyer or transfer is to take place at future date। एहा काहा ऊपर डिपेंड करिवो? एब्सोल्यूट सेल केते बेले हबो ना जदी इमीडिएटली ट्रांसफर होउची ताहले सेटा एब्सोल्यूट सेल। आमे एग्रीमेंट टू सेल बा कंडीशनल सेल केते बेले कहिबा ना जदी फ्यूचर डेट रे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्यूचर डेट रे ट्रांसफर हुए। एग्जांपल देछि X agrees to Y on the 10th October 2020 that he will sell his car to Y on 10th November 2020 for a sum of 3 lakh। जेहेतु फ्यूचर डेट रे घटना घटिबो बा ट्रांसफर होबो एहा को हमें कोन कहिबा? एग्रीमेंट टू सेल बोली कहिबा। प्रश्न आसुची केते बेले गोटी एग्रीमेंट टू सेल को आमे सेल बोली कहिबा? बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम रे आसुची केस स्टडी। an agreement to sell becomes a sell केते बेले हबो? when the time elapse, जो कंडीशन बा जो टाइम पीरियड थिला फ्यूचर डेट रे जेते बेले से टाइम पीरियड सरी जीवो एग्रीमेंट टू सेल कोठी की कन्वर्ट हे जीवो? सेल को कन्वर्ट हे जीवो। और कंडीशन आर फुलफिल्ड, एबे एबे कहली जदी शर्त गुडी को फुलफिल हे जीवो। सब्जेक्ट टू व्हिच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर, जो शर्त अनुसार जो समय अनुसार आमर कथबार्ता होइतिला कंडीशन हेतिला जे आमे प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करिवु जेते बेले से कंडीशन फुलफिल हे जीवो बा टाइम सरी जीवो सेते बेले एग्रीमेंट टू सेल कोठी की कन्वर्ट हे जीवो ना सेल को कन्वर्ट हे जीवो। बुझियला? द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट so as to constitute a contract of sale of goods under the Sales of Goods Act 1930। कौन कौन कंडीशन रहिला सब पिला माने देखिबे, सब गुडी को तुमको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करा जायछि, फिर भी देखिबे केउ केउ एलिमेंट कहबे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, जणे सेल करिवो आउ जणे बाय करिवो। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, द सेलर एंड बायर, and the two most different person, बहुत important, सेलर और बायर केबे भी सेम पर्सन हेबेनी, ए दी जण अलग अलग व्यक्ति हेबे। बुझियला? the subject matter of the contract must be necessarily be goods, बहुत important, एटी सब्जेक्ट मैटर कोन ना गुड्स हेतिबा दरकार, एवं से गुड्स जहा की कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। सर एहार माने कौन? सबु पिला माने बुझिबे, सबु पिला माने बुझिबे। मिस्टर एक्स रा गोटे बुक शॉप अछि, मिस्टर एक्स रा गोटे बुक शॉप अछि, ध्यान से बुझिबे। जहा भी कॉपी सी स्टोर करिछि, जहा भी बुक्स ता पाखरे अछि, जहा भी नोट्स बुक सैंपल पेपर जहा भी ता दुकान रे अछि, आको हमें कोन कहिबा? ना सर गुड्स बोली कहिबा। मिस्टर एक्स रा बुक शॉप रे जहा भी स्टॉक पड़ी ताको हमें गुड्स कहबा, किंतु मिस्टर एक्स ना रे गोटी
2 एकर्स रो प्रॉपर्टी अछि लैंड अछि तो एहा को हमें कोन कहबा ना मिस्टर एक्स रो एसेट बोली कहबा मिस्टर एक्स रो कोन बोली कहबा एसेट बोली कहबा ध्यान से एग्जांपल बुझिबे आउ जणे होची मिस्टर वाई जी कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सहित डील करूची रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जागा बाड़ी किना बिका करूची बिल्डिंग किना बिका करूची कंस्ट्रक्शन करूची ता पाखरे 20 एकर्स रो लैंड अछि सब पिला माने रिप्लाई देबे ये 20 एकर लैंड मिस्टर वाई पई गुड्स ना एसेट फटाफट रिप्लाई देबे गुड्स ना एसेट very good this is called as goods for Mr. Y जदि दीटा एग्जांपल को भलो भाबे बुझिबे मिस्टर एक्स पई 2 एकर लैंड होतिला एसेट किंतु मिस्टर वाई पई 20 एकर लैंड होची गुड्स बुझियला सेल्स ऑफ गुड्स आर केवल मूवेबल प्रॉपर्टी ऊपर एप्लीकेबल होबो हेंस सब्जेक्ट मैटर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी इट मे बी एक्जिस्टिंग गुड्स आगु गले पढ़िबा टाइप्स ऑफ गुड्स एक्जिस्टिंग गुड्स हितिबो owned or possessed by the seller or future goods future goods कहले आजि का डेट रे गुड्स आम पाखरे नाही गुड्स रो तयारी चलीची भविष्यत रे सेटा कंप्लीट हो आगु गले पड़िबा दीटा पॉइंट बुझिले प्राइस इन मनी ध्यान से बुझिबे एटी जहा भी कंसीडरेशन आसीबो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ मनी should be paid or promised paid माने immediately paid होबो promised माने credit माने future date रे payment होबो but there is nothing to prevent the consideration from being partly in money partly in kind consideration partly money रे मध्ये होई पारे partly kind रे मध्ये होई पारे किंतु completely kind रे होबो बुझियला यस तापरे the transfer of property in goods from seller to buyer must take place एबे हमें पढ़ी गसिले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे मैन ऑफ द मैच होची ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स बुझियला the contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price by one party and acceptance of such offer by other party एठी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो सबु एसेंशियल एलिमेंट एप्लीकेबल हे जिवो जने ऑफर दबो सेल करिबा को ताको हमें सेलर कहबा जने एक्सेप्ट करिवो से प्राइस की बाय करिबा पई ताको हमें कोन कहबा बायर बोली कहबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट हे पारे और कंडीशनल हे पारे एब्सोल्यूट कहले भाई मु तते बुक सेल कली तू मते प्राइस देली दैट इज एब्सोल्यूट कंडीशनल कहले मु तो सहित एग्रीमेंट करूची जे मु तुमको 500 रुपीस पेमेंट करिबी जदी आजि वर्षा हला दिस इज कंडीशनल ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जहां भी रहिला परफॉर्मेंस इन पार्टीज तापरे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ई सब गुडी को कोन हे जिवो ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रो मध्ये एसेंशियल पार्ट हे जिवो जेमति कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन ये सब गुडी को मध्ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रो एसेंशियल एलिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम रे आसुची डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गोटिए पॉइंट आमे बुझी सारी जे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे इमीडिएटली हबो किंतु एग्रीमेंट टू सेल रे फ्यूचर डेट रे अथवा किछि कंडीशन फुलफिल हेई सारिला परे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर पॉइंट रे आसुची इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ीतिले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड माने कोन बोथ पार्टी हैज बीन परफॉर्म देयर ड्यूटी obligation responsibility contract for which consideration has been paid
इट इज एन एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट अर्थात भविष्य रे परफॉर्म करा जिवो कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हिच कंसीडरेशन इज टू बी पेड एट ए फ्यूचर भविष्य रे हो बुझियला 3 remedy for breach the seller can sue the buyer for the price of goods because of passing of the property therein to the buyer आमे पढ़ी के आसिले सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे सेलर इमीडिएटली प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को ट्रांसफर करियो से कहूची जदी बायर पेमेंट न देला इमीडिएटली हो बा फ्यूचर डेट रे जहा ताकर एग्रीमेंट थिला जदी पैसा न दिला ताहले बायर ताकू कोन करि परिबो ता अगेंस्ट रे कोर्ट रो कंप्लेन करि परिबो कोर्ट रे कंप्लेन करि परिबो स्यू करि परिबो the aggrieved party can sue for damage only ध्यान देबे मने कर x आ y भितरे गोटे एग्रीमेंट टू सेल परफॉर्म होउची जे y होउची गोटे माने आर्टिस्ट जे की कोन करे मूर्ति तयारी करे गणेश कर मूर्ति तयारी करे x 2 सेप्टेम्बर रे एग्रीमेंट कला जे ताकू 18 सेप्टेम्बर रे कोन दरकार ना गणेश कर मूर्ति दरकार on the occasion of गणेश पूजा तो y मध्य एग्री करथिला दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल जदी फ्यूचर डेट रे y कोन करूची ना परफॉर्म करि पारुनी गणेश को मूर्ति सप्लाई करि पारुनी ड्यू टू एनी रीजन ही पारे ताहले x कोन करिवो ना केवल डैमेज पई क्लेम करिवो क्लेम फॉर डैमेज बुझियला यस एंड नॉट फॉर द प्राइस बहुत ध्यान से बुझिबे एग्जाम रे एमसीक्यू रे तुमको कंफ्यूजन करे एग्रीमेंट टू सेल रे आमे केवल डैमेज पई क्लेम करि परिबा स्यू करि परिबा अनलेस द प्राइस वाज पेएबल एट ए स्टेटेड रेट प्राइस पई आमे केते बेले क्लेम करिबा ना जदी एग्रीमेंट ही जाईति जे एई डेट रे आमे फुल प्राइस करिवार अछि ताहले आमे कोन करि परिबा ना फुल प्राइस पई क्लेम करिबा जनरली एग्रीमेंट टू सेल रे आमे केवल डैमेज पई स्यू करि परिबा 4 नंबर पॉइंट लायबिलिटी ऑफ पार्टीज ए सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ बायर भाई रे आमे गले गोटे शोरूम रो बाइक किनिबा पई बजाज पल्सर 220 किनिले बजाज शोरूम रे सब तक प्राइस पे कर देले बाटरे आसला बेले कोन हला ना गोटे कोनोसी जगह रे हम गाड़ीटा टिके बाड़ी हे गला एक्सीडेंट हे गला छोटो एक्सीडेंट तो कौन हला तार हेडलाइट भांगी गला तो से जगह रे कौन हबो जहा भी रिस्क अछि बायर काहे की ना प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हे जाई सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ सेलर किंतु एग्रीमेंट टू सेल रे मने कर 6 फुट गणेश मूर्ति जहा मु ऊपर तुमको एग्जांपल दउथि गणपति बाबांकर 6 फुट मूर्ति आमे ठीक करिके आसीथिले 19 तारीख 18 तारीख रे दबा पई कोनोसी कारण बसत ता ऊपर किछि पड़ी जाऊ बा मिस हैंडलिंग रे हो से मूर्ति भांगी गला से जगह रे लायबिलिटी ऑफ कार आसी जिवो सेलर आसी जिवो काहे की ना प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हे बुझियला बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ लॉस दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोइंग द ओनरशिप मन रखिबे जहा पाखरे ओनरशिप अछि ताहा पाखरे रिस्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे जेहेतु इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाउची जहा भी रिस्क आसीबो ऑन अकाउंट ऑफ बायर रिस्क ऑफ लॉस एग्रीमेंट टू सेल रे कहार ना सेलर रो आसी नेचर ऑफ राइट्स क्रिएट्स जॉस इन रेम क्रिएट्स जॉस इन पर्सोनाम ए पॉइंट को मन रखिबे ई गुटे वर्ड एग्जाम रे पकोउची जनरली सीए फाउंडेशन जस्ट इन रेम नेचर ऑफ राइट्स जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनाम ए कथाटा मन रखिबे राइट ऑफ रीसेल सेलर रीसेल करि परिबनी गुड्स किंतु the seller may sell the goods since ownership is with the seller agreement to sell रे मु कोन करि परिबी जेहेतु प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हेनी ओनरशिप ट्रांसफर हेनी तुमो साइड रो जदी किछि भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होउची मु ताको रीसेल करि परिबी
In case of insolvency of seller, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. से कौची जदि सेलर इनसॉल्वेंसी हो जाउची द ऑफिशियल असाइन कहले तार लीगल हेयर तार एजेंट विल नॉट एबल टू टेक ओवर द गुड्स से गुड्स नहीं परिबेनी किंतु जेउ प्राइस बायर पे करिनी सेति पई से माने क्लेम करि परिबे the official assignee will acquire control over the goods but the price will not be recoverable सब पिला माने बुझिबे एग्रीमेंट टू सेल रे ओनरशिप ट्रांसफर हेनी सेलर देबालिया हे गला जेहेतु प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हेनी तो से केस रे कोन करा जिवो जेउ लीगल हेयर बा ऑफिशियल असाइनी बा एजेंट माने थिबे से कोन करिवे सेल तो हेनी केवल एग्रीमेंट टू सेल हेच प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हेनी कि पोजेशन ऑफ गुड्स मध्य दिया जाय तो एग्रीमेंट टू सेल रे ऑफिशियल असाइन ऑफ सेलर कोन करि परिबे ना केवल 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 गुड्स को कंट्रोल करि परिबे बा रिटर्न करि परिबे लाइन करि परिबे प्राइस को क्लेम करि परिबे नाही जदि बायर इंसॉल्वेंट हे जाउछ ऑफिशियल असाइन विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स बायर जे लीगल हेयर थिबो बायर जे कोन थिबो ऑफिशियल असाइन थिबो से गुड्स को नै पारे एग्रीमेंट टू सेल केस रे कोन होई परिबो द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स मन रखिबे एग्रीमेंट टू सेल रे बायर छडा केई कंट्रोल ओवर गुड्स को नै परिबे नाही बुझिया यस तो फटाफट ए पॉइंट को कवर करिवे आमे पढिले प्रथम रे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केस रे इमीडिएटली हुए सेल ऑफ केस रे किंतु एग्रीमेंट सेल रे फ्यूचर डेट रे बा आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल होची एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट टू सेल होची एग्जीक्यूटेड रिमेडीज ऑफ ब्रीच सेल केस रे हमें कोन करि परिबा ना बायर सब प्राइस पई सीयू करि पारि सॉरी सेलर बायर को सीयू करि परिबो फुल प्राइस पई किंतु एग्रीमेंट टू सेल रे हमें केवल डैमेज पई क्लेम करि परिबा लायबिलिटी ऑफ पार्टी रे कोन होतला ना जहां भी प्रॉपर्टी रो लॉस ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ बायर सेल केस रे किंतु एग्रीमेंट टू सेल केस रे जहां भी लॉस ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इज लायबिलिटी ऑफ सेलर काहे कि ना प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हेनी सब बेले मन रखिबे रिस्क फॉलो द ओनरशिप जहां पाखरे ओनरशिप अछि तार रिस्क बर्डन ऑफ रिस्क जदि लॉस होची ताले से रिस्क होई जिवो कहार ना बायर किंतु एग्रीमेंट टू सेल केस रे रिस्क रहिबो सेलर रो जेहेतु ओनरशिप ट्रांसफर हेनी नेचर ऑफ राइट ए पॉइंट मन रखिबे क्रिएट्स जॉस इन रेम क्रिएट्स जॉस इन पर्सनम एग्रीमेंट टू सेल केस रे राइट टू सेल केस रे कोन करि परिबो ना सेलर रीसेल करि परिबोनी किंतु एग्रीमेंट टू सेल केस रे रीसेल करि हबो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर जदि सेलर इंसॉल्वेंट होउची तार ऑफिशियल असाइनी बा एजेंट जेउ माने थिबे से कोन करि परिबे सेल केस रे प्राइस को रिकवरी करि परिबे बायर ठार किंतु एग्रीमेंट टू सेल केस रे से माने कोन करि परिबे ना कंट्रोल ओवर गुड्स नै जेबे जदि बायर इंसॉल्वेंट हे जाउची ताहले ऑफिशियल असाइनी ऑफ बायर कोन करि परिबे सेल केस रे गुड्स को कंट्रोल को नै परिबे किंतु एग्रीमेंट टू सेल केस रे ऑफिशियली असाइनी ऑफ बायर इंसॉल्वेंसी रे इंसॉल्वेंसी केस रे कंट्रोल ओवर गुड्स नहीं परिबे नाही बुझियला अरे बुझियला कि बुझियला यस सर बुझियला तो एबे पढिबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड केमिति हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करथा जीवा आगु यस contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and acceptance such offer ध्यान से बुझिए तामाने एटी तीनटा पॉइंट रही गला ऑफर भी रहिला प्राइस यानी कंसीडरेशन भी रहिला एक्सेप्टेंस भी रहिला ऊपर हमें डिस्कशन करके आसी देयर मे बी इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ गुड्स ऊपर हमें डिस्कशन करके आसी और देयर मे बी इमीडिएटली पेमेंट ऑफ प्राइस पैसा इमीडिएट हे जिवो but it may be agreed that delivery is to be made at some future date
there may be immediately delivery of goods and an immediately payment of price. बहुत जेन्युइन कथा भाई आज मु डेलीवरी देली आज पैसा दियो बा आज डेलीवरी नहीं जाओ फ्यूचर रे पैसा दबो बा आज एडवांस रखो मते अमुक डेट रे डेलीवरी दो. It may be agreed that delivery or payment both are to be made installment. मु फेज वाइज मने कर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी केस रे कोन होची मने कर एक्स निजर घर तयारी करूची हाउस बिल्डिंग करूची वाई होची सीमेंट डीलर वाई होची को डीलर ना सीमेंट डीलर तो एक्स कोन करिवो ना जेति की तार घर रो फेज वाइज काम कंप्लीट ही का जीवो वाई ठारू सेति की सीमेंट किणी किणी का जीवो एवं फेज वाइज रे प्राइस दे दे का जीवो एमानक भितर एग्रीमेंट हैला एक्स कहूची वाई की मु घर तयारी करिवि जहा सीमेंट लागिवो मु तो ठारू नेबी तो आज काम होची आज 10टा सीमेंट दरकार वाई 10टा सीमेंट दला काली 15टा दरकार काली 15टा दला तापन 20टा दरकार तापन 20टा दला तापन 5टा दरकार तापर दिन 5टा दला तो सेमती इंस्टॉलमेंट रो मध्ये पेमेंट हे परिबो इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट आज एग्रीमेंट हे गला भविष्य रे मु पैसा देबी भविष्य रे मु कोन नेबी ना डिलीवरी नेबी ओके. A contract of sale is made by an offer section 5 रे कुआ गला according to section 5 subsection 1 a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price जोटा को ऊपर हमें पढ़ी के आसिले and acceptance of such offer बुझिएला the contract may provide for immediate delivery of goods से contract ए आई पर संगे संगे goods transfer हो or immediate payment of the price or both immediate mu goods tali immediate payment diyo or for a delivery payment by the installments delivery bhi installment rahabo payment bhi installment rahabo or that delivery or payment both shall be postponed mane future date habo are hobo ki nahi yes आमे कैरेक्टरिस्टिक्स रे पढ़ी के आसिले सब्जेक्ट मैटर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गुड्स सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गुड्स ए डेफिनेशन को रट्टा मारिनी भविष्य रे जेउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो ये डेफिनेशन रो क्वेश्चन आसीबाटा फाइनल गुड्स रो माने ओके तो स्टार्ट करियो the goods which form the subject matter of contract of sale may be existing goods ही पारे जहाँ एबे available अछि owned ही पारे possessed ही पारे जोटा कि एबे सेलर पाखरे available अछि बा सेलर अधीन रे अछि और future goods अर्थात सेलर ताको ऑर्डर देइछि बा सेलर ताको बनौछि goods रो माने कोन सब पिला माने बुझिबे every kind of movable property जिते प्रकार movable property अछि other than auctionable claim and money auctionable claim के and money ये दीटा केबे भी goods हेबे नाही money goods auctionable claim माने right to exercise price ये केबे भी right to exercise माने किछि पाइबार अधिकार सेगुडी को आमे गुड्स कहबा नै आउथरे एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ताको आमे गुड्स कहबा किंतु ए दीटा जिंस आसीबे नाही कोन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी ये गुड्स हेबे नाही तापर एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर ध्यान देबे स्टॉक एंड शेयर भी गुड्स बोली कुहाचिबो ग्रोइंग क्रॉप्स जहा बिले रे धान फळुची गहम फळुची मक्का फळुची आंब फळिची बनाना फळिची ये सब गुडी को हमें कोन कहि परिबा गुड्स बोली कहि परिबा आपको जे ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास ये भी गुड्स थिंग्स अटैच्ड टू एवं जेउ जेउ जिंस थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड रो ऊपरी भाग सहित जड़ित ताकू मध्ये हमें गुड्स बोली कहिबा बुझियला which are agreed to be solved
बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहा को आधार करी कौन करा जाउची सेल कॉन्ट्रैक्ट करा जाउची बा एग्रीमेंट टू सेल करा जाउची बुझियला एग्जाम रे एथिरु पक्का क्वेश्चन आसीबो माननी कि चलो लेखि कि नियो हबो auctionable claim are claims which can be enforced only by an action or suit example debt डिवेंचर बा पैसा काकू धार दीछ दैट इज कॉल्ड एज ऑक्शनेबल क्लेम ए डेब्ट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स गोटे डेब्ट को आमे मूवेबल प्रॉपर्टी कहि परिबानी कि गुड्स बोली कहि परिबानी इवन ए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड मने करो मु स्टेट बैंक रे मिस्टर एक्स कोन करिछि ना 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करिछि जे रिसीव्ड अछि ताकू कहै छै ऑक्शनेबल क्लेम ताहा मध्य गुड्स होबनी under section 176 of the Indian Contract Act read with section 2 clause 7 of the Sales of Goods Act important जिनस मन रखिबे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव को मध्य आमे गुड्स कहबा ना तापर देखिबे गुड्स इंक्लूड बोथ टैंजिबल गुड्स इनटैंजिबल गुड्स सर इनटैंजिबल गुड्स कोन सॉफ्टवेयर तुम एंड्रॉइड फोन रे बा आईफोन रे जो सॉफ्टवेयर तुमे पकोचो बा तुमर विंडोज रे जहा तुमे कोन करूचो इंस्टॉल करूचो एप्स लाइक गुडविल कॉपीराइट्स पैटेंट्स ट्रेडमार्क्स ये मध्य गुड्स कहबा काहे कि मने पकाओ पार्टनरशिप रे तुमको पढ़ा जाइतिला गुडविल को हमें परचेज करि परिबा कॉपीराइट्स के हमें परचेज करि परिबा हमें लाइसेंस को परचेज करि परिबा लेट्स सपोज आम पाखे दी जन पढ़ुवा पिला से माने डिसाइड कले आमे बिजनेस करिबो बिस्किट बिजनेस करिबे से माने देखिले मैरीगोल्ड विटा मैरीगोल्ड रो बहुत मार्केट रे सेल्स अछि तो से माने कोन कले ना विटा मैरीगोल्ड थारो फ्रेंचाइज बा लाइसेंस आनिले एवं गोटे फैक्ट्री करिकी से लाइसेंस रे विटा मैरीगोल्ड रो बिस्किट प्रोडक्शन करी तार डिस्ट्रीब्यूशन नै गले निज डिस्ट्रिक्ट तो ए लाइसेंस को मध्य हमें गुड्स बोली कहि पारि स्टॉक शेयर ये गुड्स ही जिवे गैस गुड्स ही जिवो स्टीम वाटर इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम रे पढुची कोटे कोन से एग्जाम रे मु फेस करि के आस्तली जे इलेक्ट्रिसिटी की गुड्स कहबे कि कहबा डिक्री ऑफ द कोर्ट आर आल्सो कंसीडर टू बी गुड्स ए समस्त को हमें गुड्स बोली कहबा प्रश्न आसुची गुड्स केते प्रकार एबे एबे हम तुम सहित डिस्कशन करथली एक्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स ए दीटा बाबत जस्ट आलोचना करथली एबे विस्तृत भाव में पढिबा एक्जिस्टिंग गुड्स ही पारे स्पेसिफिक गुड्स असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स कंटिजेंट गुड्स जहा की गुड्स रो मेन पार्ट रे आसी जिवो यानी गुड्स होची तीन प्रकार एक्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स कंटिजेंट गुड्स एक्जिस्टिंग गुड्स को तीन भाग रे डिवाइड करा जाई छि स्पेसिफिक गुड्स असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स पढ़िबा एक्जिस्टिंग गुड्स रो माने कोन जहा एक्जिस्ट करूची ताको हमें एक्जिस्टिंग गुड्स बोली कहबा आर सच गुड्स as are in existence at the time of contract of sale contract of sale बेले जे गुड्स एक्जिस्ट करूची अवेलेबल अछि ताको हमें एक्जिस्टिंग गुड्स कहबा those owned and possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale section 6 हिसाब रे एक्जिस्टिंग गुड्स को अगेन तीन भाग रे डिवाइड करा जाई छि the existing goods may be of following kinds specific goods प्रथम पॉइंट आसिला स्पेसिफिक गुड्स रो माने कोन गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मु बजाज शोरूम को गली मिस्टर एक्स बजाज शोरूम को गला पल्सर 220 रो कोन करिवा पई ना बाइक परचेस करिवा पई मिस्टर एक्स को ब्लैक कलर ही पसंद से ब्लैक कलर को चूज करिके आसिला मते एई गुड्स टा को ही दरकार
बजाज पल्सर 220 ब्लैक कलर दैट इज कौन है गला स्पेसिफिक गुड्स है बुझिएला यस any specified and finally decided like a Samsung Galaxy X7 Edge whirlpool washing machine of 7 kg etc. Example A had 5 car and a different model. A पाखरे 5टा कार अछि different model अछि. He agreed to sell his Santro car to B. Santro car बिकी दबो. And B agreed to purchase the same car. In this case, sale of specific goods as car has been identified and agreed that time of contract of sale. This is your point number B. ठीक करिवे ascertain goods. This is your point number C. Unascertain goods. Ascertain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. अरे भाई बाइक शोरूम को गली राइट बाइक शोरूम को गली मु आगे चॉइस कर देली कोन ना 220 पल्सर गाड़ी किनी राइट एग्रीमेंट हे गला सब हे गला एग्रीमेंट परे मु जाय कि कहिल जे मते ब्लैक कलर दरकार दिस इज कॉल्ड एज ascertain goods. This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense of specific goods. दीटा जाकर माने अलग पाखा पाखी समान. When form a lot or out of large quantity जेमती कहली बहुत गुडी गाड़ी अछि ताक भितर मते गोटे पिक करिवार अछि of unascertain goods the number and quantity contract is identified. भाई बजाज शोरूम रे बहुत गुडी गाड़ी अछि ता भितर कोउटा नेबी ना जोउटा को चूज करली सेटा हेगला ascertain goods. existing goods माने कोन goods वर्तमान अवेलेबल अछि specific goods माने कोन 220 रो एई मॉडल मते दरकार एई मिरर लागिथिबो. ascertain goods माने कोन ना out of large quantity मते गोटे बाछिबार अछि. A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales. These bales were selected and set aside. ताको सिलेक्ट करी के हमें अलगा रखिले. On selection of goods become ascertain goods. जेते बेला हमें goods टाको सिलेक्ट कर देले सेटा हेगला ascertain goods. Unascertain goods are goods which are not specifically identified. मु कहि दे के आसिले एडवांस कर दे के आसिले जे मते 220 नंबर अछि बा बजाज शोरूम रो ही गोटे गाड़ी किनिबार अछि. goods which are not specifically identified exactly मु आइडेंटिफाई करनी ए गाड़ी नेबी बेले और ascertain at the time of making the contract जेतेबेले कॉन्ट्रैक्ट कली सेतेबेले मु डिफाइन करी. They are indicated or defined only by the description or sample. जेतेबेले सी मते सैंपल देखेले जे एई कलर हम पाखरे अछि बा डिस्क्राइब करले मॉडल तो सेतेबेले मु कहिली नै एटा को चूज कर बुझिया. If A agrees to sell B one pocket of salt out of a lot of 100 packets laying in the shop. ए दुकान रे बहुत गुडी पैकेट अछि लुण पैकेट ता भितर जे कोनसे गुटे से बी को बिकियो कारण बी रो 1 केजी सॉल्ट दरकार. It is a sale of unascertain goods. भाई को लुण पैकेट ताको बिका होबो सेंति जणा नै डिफाइंड हेनी ascertain हेनी because it is not known which packet is to be delivered. As soon as the particular packet is separated from the lot, it becomes ascertain or specific goods. Second example, X has 10 horses. He promises to sell one of them but does not specify which horse he will sell. It is a contract of sale of ascertain goods. Unascertain goods. से को घोड़ा बिकिबो तुमको कहि. Second point आसला future goods. Future goods माने कोन name suggests that it is not available today. भविष्यत रे आसुची मने करो आईफोन
16 Pro Max एबे तार R&D चली आईफोन 16 Pro Max तार कौन चलची ना R&D चली एडवर्टाइज हो गला अमिताभ बच्चन सर आसिले कहले कमिंग सून जेहेतु एवं डिक्लेयर करा गला फास्ट लॉट रे ओनली 1000 पीस आसुची तो जो माने किनिबा पई इच्छुक से माने कोन करंतु ना स्लॉट बुक करंतु बुझे गुड्स आसीनी आसीबो एडवर्टाइजमेंट हे कि आज थारु बुकिंग चलला एई भलिया गुड्स को हमें कहबा फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर हेनी हबो टू बी और टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी एक्वायर्ड आनिबार अछि बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हे सरला परे से गुड्स को आनी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल ए लाइन टाकू लिखित रखन फ्यूचर गुड्स केस रे एग्रीमेंट टू सेल हमें कह इट इज नेवर एक्चुअल सेल एब्सोल्यूट सेल नो because a person cannot transfer that what is not in existence मो पाखे जोटा नाही मु आपण मानु केमति देबी एग्जांपल 100 क्विंटल ऑफ पोटैटोस इज टू बी ग्रोन ऑन एस फील्ड भाई ए रो क्षेत्र रे आलू फळुची इज नॉट इलीगल दो द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल This is an example of agreement to sell. भाई पोटैटो फळला परे से दो P agrees to sell Q all the milk that his cow may yield during the coming year. P कहला आरो वर्ष मो गाई जा किरो दबो तते मु बिकि देबी. This is a contract of sale of future goods. तापरे आसुची contingent goods. The acquisition of which by seller depends upon an uncertain contingency. Seller acquired करिनी जदि किछि uncertain contingency event occur करिवो ताहेले ये कोन करिवो ना acquired करिवो से भलिया गुड्स को हमें कोन कहबा contingent goods बोली कहबा. Contingent goods also separate as contingent goods also operate as an agreement to sell, not a sale. So far as the question of passing property to the buyer is concerned. कारण goods तो मो पाखरे नाही seller तो acquired करिनी तो तुमको दबो केते बेले hence ये agreement to sell हे पारे जे मते आसिले goods मु तुमको देबी. In other words, like the future goods, in case of contingent goods also, property does not pass to the buyer at the time of making the contract. Example, A agrees to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from his present owner. This is contract of sale of contingent goods. अब लास्ट पॉइंट रे आमे फास्ट पार्ट आज कवर करिबा दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फास्ट पार्ट आज हमर कवर हे जिवो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस कारण आमे पढिचे प्राइस इज सोल कंसीडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सेक्शन 9 एंड 10 रे कुआ गला केमिति आमे प्राइस को फाइंड आउट करिबा. द प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड by contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed. ये कॉन्ट्रैक्ट अनुसार डिसाइड करा जाए और एमिति डिसाइड करा जाए भविष्यत रे आमे प्राइस को डिसाइड करिबा और may be determined by course of dealing between the parties. जेते बेला आमे दबा नबा करिबा सेते बेला प्राइस डिसाइड करिबा एबे तमे गुड्स नियो बास किछि पैसा देकी जाइता. Where the price is not determined, जदि कोनोसी गुड्स रो प्राइस डिटरमाइन हेइन in accordance with the foregoing provision माने ऊपर प्रोविजन अनुसार अर्थात इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट रे हमें कहले एति की प्राइस दे जिंस नै जा किछि गुड्स केस रे कोन करा जाउची
ना बायर हमको फेथ बढ़ेबा पई आमे कहूचे भाई तू एटा नै जा यूज करिवु तापर मते प्राइस दो बा भविष्यत तू नै कि यूज कर 10 दिन परे तते जे जिंस भल लागिला तारे प्राइस कहबु एई प्राइस रे मुने फ्यूचर रे हमें डिसाइड करी से कहूची जदि प्राइस उपरोक्त प्रोविजन अनुसार डिसाइड करा जाउ ना द बायर शैल पे द सेल ए रीजनेबल प्राइस ताहेले बायर को कोन करिया पड़िबो गोटे रीजनेबल प्राइस दबाक पड़िबो व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भाई रीजनेबल केते हो ग्रहण योग्य प्राइस केते हो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस डिफरेंट केस रे ये कोन करूची ना डिपेंड करूची प्राइस मींस मॉनेटरी कंसीडरेशन मन रखिबे प्राइस माने होची मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड इंस्टेंटली एक कथा हम ऑलरेडी पढ़ी के आसले संगे संगे सेक्शन 9 अनुसार एग्री टू बी फिक्स्ड ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट आज कॉन्ट्रैक्ट हला कॉन्ट्रैक्ट अनुसार जीव जीव प्रोविजन रहिला सेही अनुसार में प्राइस डिटरमाइन करिबा दैट इज बाय ए वैल्यूअर और डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज जते बेले देना नेना करिबा सेते बेले हम कोन करिबा प्राइस डिटरमाइन करिबा एहा सेक्शन 9 रे कोरा एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन सेक्शन 10 रे कोन कोला देखो एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन where there is an agreement to sell जदि किछि आम भितर एग्रीमेंट टू सेल होउची तो से जगह वैल्यूएशन केमति हो गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी जहा वैल्यू करिवो से अनुसार हमें प्राइस डिटरमाइन करिवो एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड भाई कुआ गला जे आम भितर जा किना बिका हबो एग्रीमेंट टू सेल रे थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करिवो एक्स कहूची कोन ना मो मामू मते जति की प्राइस रे कहबे मो सति प्राइस रे मो लैंड टाकू सेल करिवो जदि थर्ड पार्टी करूनी प्राइस डिटरमाइन ताहले से एग्रीमेंट टा कैंसिल हो जाय प्रोवाइडेड दैट इफ गुड्स और एनी पार्ट thereof have been delivered to and appropriated by the buyer he shall pay a reasonable price thereafter भाई x कहला x आ y की आंको भीतर एग्रीमेंट टू सेल हला x रो गुटे लैंड अछि बिकिबा x कहला मो मामू डिसाइड करिवे प्राइस अकॉर्डिंगली x कोन करदला ना डिलीवरी देई दिछि मामू डिसाइड करलेनी ताले से केस रे कोन करियो पड़िबो ना y के रीजनेबल प्राइस दबाको पड़िबो मार्केट रे जा वैल्यू चली छि सेही वैल्यू रे दबाको पड़िबो where such third party is prevented from making the valuation by a fault of the seller or buyer जदि x रो फॉल्ट पई बा y रो फॉल्ट पई थर्ड पार्टी को बाहर रखा गला डिटरमाइन करबा पई प्राइस द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन सुइट फॉर डैमेज माने मो पॉइंट कोन बुझियला मने करो y ता मामू को जाई कि धमकेला x रो अंकल को जाई कि कोन करला ना धमकेला थ्रेटनिंग करला तो x रो अंकल कोन करला ना मना कर देला मु से प्राइस को डिटरमाइन करबी प्रिवेंटेड बाय y तो अकॉर्डिंगली लैंड रो कॉस्ट दिला 10 लाख किंतु से 7 लाख रे बिक्री कर देला x तो प्राइस जानि नी ता अंकल डिसाइड करथांदे अंकल को ये थ्रेटनिंग करला तो सी कोन करछि ना 7 लाख टका रे बिकी देछि परे जणा गला मार्केट रे लैंड रो रेट चलछि 10 लाख रुपीस हेंस जे विक्टिम पार्टी रहिले एग्रीविड पार्टी रहिले सी कोन करि परिबे ना अदर पार्टी को डैमेज पई सुइट करि पारि पार्टी इन डिफॉल्ट बुझियला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा कंडीशन एंड वारंटी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रो पार्ट 2 बा यूनिट 2 मध्ये तमे कोइ बुझियला आज पई एते की फुनी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे बाय बाय।